start with this chapter, hydrostatics. Basically, इस chapter के अंदर we primarily look after like forces acting in liquid or fluid. अच्छा, you can't see the screen. आपको दिख रही? नहीं दिख रही होगी. Okay. Is it visible now? Okay. So इस chapter के अंदर we are primarily going to look at forces exerted by fluids. Especially, fluids include both liquid and gases. So all the thing which is applicable on liquid is mostly also applicable on liquid as well as on gas. However, gases has certain different properties as well, but mostly force के मामले में whatever is applicable on liquid, that is also applicable on gas. Apart from that, जो liquid पे applicable है, वो तो सारे gases पर applicable होते ही हैं, but उनके अलावा भी gases के पास कुछ और properties होती है which is different from liquid. ठीक है? तो खैर that is studied differently under, that will be studied as a different chapter altogether. Maybe 9th में there will be chapter on gases, ideal gas equation and all. So वहाँ पर we will have a look over them. But for now, we are primarily looking on forces exerted by fluids or in fluids from the aspect of liquids, primarily liquids. ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? We are going to forces exerted by fluids and that too at rest. ठीक है? At rest while they are not moving. So statics का मतलब होता है rest. Hydro means generally water. Water यहाँ पर word लिया गया है to indicate liquids. ठीक है? So in this we are basically going to learn how the liquid or insert fluids are going to exert forces. ठीक है? या फिर if we are applying some force on them, how they are going to respond it. ठीक है? So that's the prime motive of this chapter. एक छोटी सी चीज होती है, there is something called as kinetic theory of matter. ठीक है? काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर के अंदर में हमें ये जानना होता है 2-3 चीजें स्पेशल. द वेरी फर्स्ट वन इज we know that matter का independent unit और smallest unit जो होता है that is generally molecules. ठीक है? कोई भी matter है उसका smallest unit जो है that is generally a molecule. कुछ cases में it is also, जैसे pure matter है that is elements, तो उस केस में molecule नहीं भी हो सकता है, उस केस में atom होता है. ठीक है? But in general, the constituent of the smallest constituent of matter is molecule. ठीक है? हाँ, tomorrow ये अभी जो ले रहा हूँ वो कल वाला ले रहा हूँ, Wednesday का. ठीक है? जो रह गया था.
8 to 9 था ना, 8 to 9:30 जो कि कल नहीं हो पाया था, वो आज मैं बैकअप कर रहा हूँ, ठीक है। और कल वाला एज इट इज कल रहेगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ constituent particles of matter, that is molecules, is directly proportional to the absolute temperature. Now यहाँ पर एक वर्ड नया आया, absolute temperature. Have you ever heard of it? कभी सुना था पहले? जनरली नहीं सुने रहते हैं हम लोग। अच्छा, टेम्परेचर का हमारे लिए यूनिट क्या है? टेम्परेचर के दो नोन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, राइट, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट F for Fahrenheit and degree for degree Celsius. ठीक है, but SI unit of temperature is something else. SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin for capital K. ठीक है, this is also known as temperature on Kelvin scale is also known as absolute temperature. Is that okay? Absolute temperature क्या है? Temperature on Kelvin scale. ठीक है, तो अभी होता ये है कि केल्विन स्केल का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट स्केल के टेम्परेचर को हम लोग मैप कैसे करेंगे। तो मान लो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मैं C से, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को F से और केल्विन स्केल के टेम्परेचर को K से डिनोट करते हैं। इट हैपेंस टू बी लाइक K minus 273 by 100 is equal to C by 100 is equal to F minus 32 by 180. ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, और इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग केल्विन स्केल में कोई भी, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में क्या लिखेंगे? 50 by 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 273 50 में ऐड हो जाएगा, 323 हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट मान लो 80 या 92 आया, तो अब 92 फ़ारेनहाइट विल बी हाउ मच? 92 minus 32 will be 60. 60 by 180 is 1/3. इसको 100 इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 will be 100/3 will become 33.33 और इसमें 273 को ऐड कर लेंगे। इज दैट ओके? तो वो टेम्परेचर हो जाएगा मेरा केल्विन स्केल पे वैल्यू, और उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इज दैट ओके? सो कोई भी टेम्परेचर अगर दिया हुआ है तो कैन वी कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन स्केल। फॉर एग्जांपल 2-3 टेम्परेचर देता हूँ,
क्वेश्चन एक छोटा सा, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू के स्केल। ठीक है, ए 60 डिग्री सेल्सियस, बी 122 Fahrenheit. Can we do this quickly? हो जाएगा जल्दी से? But I didn't understand. Temperature on Kelvin scale is also known as absolute temperature, or kinetic energy of constrained particle is always proportional to the absolute temperature, not degree Celsius or anything else. ठीक है? Second point इसका ये होता है kinetic theory of matter का कि there is something called as cohesive force and something called as adhesive force. ठीक है? Force of attraction between same type of molecules is known as cohesive force ठीक है, and force of attraction between dissimilar or different type of molecules is known as adhesive force. ठीक है, cohesive and adhesive force these forces of attraction is directly proportional to or depends upon the intermolecular spacing. ठीक है, the force of attraction. Yes, I'll ask sir to share. If he has uploaded, I'll ask him to do that. If not, I'll ask him to upload. The force of attraction between particles is inversely proportional to the interparticle spacing between them. ठीक है, सॉलिड्स के लिए क्या होता है?
interparticle spacing is least and interparticle force of attraction is maximum. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, interparticle spacing and interparticle force of attraction both are intermediate. ठीक है, और गैसेस में क्या होता है, interparticle spacing is very high. large and interparticle force of attraction is least. ठीक है, अब इसके बेसिस पर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बनते हैं। गैसेस में लीस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेपरेशन लार्ज रहता है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव रिजिड शेप, नो रिजिड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इनका क्या होता है, नो रिजिड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम और इनका क्या होता है, रिजिड शेप and fixed volume. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? Yes. ओके, ठीक है, आज के लिए ना मैं यहीं पे रुकूंगा एंड